Okay. Okay. Let me see अगर record हो रहा है कि नहीं. Okay, because this is a new app, so I have to keep on checking. Otherwise record नहीं हो रहा है तो it's of no use, right? Great. So a very good evening to all my dear students. We'll begin with today's lecture. As you all know, today officially is our last. So, जो CSR, you all know the meaning of CSR students by now. Corporate social responsibility. It basically means what? Giving back to the society. Okay. So when we talk about now giving back to the society, what I basically mean here is, see, companies, even when we give back to the society, students, I told you in the very, there is a certain group known as stakeholders, shareholders. Yes or no? That is what is basically told over here. If I will tell you, no, you have to be responsible. See, मैंने आप लोगों को कहा था, when we are indulged in any social activity, okay, always remember basically whatever it is, okay, we have to be accountable. You all have studied accounting standards and all. I mean, what the real picture is, we are supposed to show that to the shareholders, right? So see, there is a concept in textbook known as CSR scorecard. If you observe in your textbook, basically the last chapter आपका जो है CSR का, okay, what exactly is CSR scorecard, I will tell you. Now, see, students, if you remember, during the initial lectures when I was doing corporate governance and all, I had told you what is Companies Act. Anyone remembers the year? If you, let's see, if you remember, Companies Act का year किसी को याद है? Companies Act. Anyone? Basically 2013. Okay, so try to understand. So students, see, name say it is again written Companies Act. What does Companies Act mean? Basically a law, certain standards, procedures which companies have to follow. Okay, students, this is an important question. Now let me see who remembers. See, this was ideally done when I was teaching you CSR and all. How much percentage of the total earnings does any company have to donate for any sort of CSR activity? Can you tell me? I just want to know the percentage. कितना donate करना पड़ता है? Very good. Shivani has given a very quick answer. I am absolutely happy with what you are saying. Excellent. The correct answer is 2%. Good, Ramdas. Wow. Very good. People remember or have even seen my lectures. Very good. Okay. So, see, students, CSR scorecard का concept now I will explain you. Okay. Because ये introduction में लिखा था. See. Okay, you tell me, students, basically, what is NSE? अगर for example, if I remember कोई FM का student है, banking finance, they already know this concept. NSE क्या है? NSE. Anyone? BSc, NSE, come on, students, you should know it by now. What are these? I mean, I want to hear the full form. Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, yes or no? So, see, students, what they have basically classified over here is, see, there are some companies basically, students, good, Shamal, very good. So, as if there are a few companies, okay, basically a group is made. So, for example, if I will tell you, आपकी textbook में दिया है, there are a few companies, okay, for example, India's top 50 companies. What they are basically doing is, उन्होंने maybe in one particular year, for example, if their total contribution only towards CSR activity was, almost 2200 crores, एक example है, right? तो उसमें वही कहा है कि see students, every year what companies do basically, okay, तो ये जो percentage है या amount है, it should increase, students, right, towards CSR activity.
तो स्कोर कार्ड का मीनिंग क्या हो जाता है? सी इट्स वेरी मच सिमिलर. यू रिमेंबर स्टूडेंट्स व्हेन यू वर यंग, आपको वी यूज्ड टू हैव समथिंग लाइक अ पेरेंट्स टीचर मीट एवरी ईयर. यस और नो? तो उसमें आपका टीचर जो होता था, he or she used to give your report card to your parent कि your child has performed this way, your child has performed that way. Yes or no? अच्छा बुरा जो भी होता था, they used to tell, right? तो सेम वे स्टूडेंट्स, CSR स्कोर कार्ड मतलब क्या? इट हेल्प्स अस टू कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट एग्जैक्टली आर ऑल द CSR एक्टिविटीज डन. Okay, I hope you all are understanding. Yeah. Next, if I will tell you basically कि ये सब टेक्स्ट बुक में लिखा है स्टूडेंट. सी आई विल नेम अ फ्यू कंपनीज जो ओके, कैन यू गेस नाउ? सी मैंने आप लोगों को वीडियोस भी दिखाए. सो कैन यू नेम अ फ्यू कंपनीज? कुछ कंपनीज के नाम आर वेरी सेम. Try to recollect what names I have told you, or maybe for example, I must have told you when it comes to CSR, these companies are always ahead. Can you please name a few? Just a few. Absolutely right. This is what I expect the first name to hear. Sunaina and Ramdas have told me. Excellent. Tata. Absolutely. Okay. इसके अलावा can anyone tell me? Wipro. Yes, definitely. Very good. Shamal. Other than these students, can you name one more? Good, Sunaina also answered Wipro. इसके अलावा चलो tell me one or two more. Good, Ramdas. Reliance is also the right answer. See, Reliance students, if I will tell you again, not as much as Tata Group, but again they are very good overall अगर आप देखते हो, even as compared to Adani and all. One more example students, इसमें if you remember, I had told you about one philanthropist. अगर आपको याद आ रहा है तो, she is a very simple lady. मैंने आप लोगों को कहा था. Once she had come in KBC also. She runs a foundation, especially in South. Good Shivani. I am referring to Sudha Murthy basically. मतलब she is right, absolutely. Infosys, very good. These people see starting से आ रहे हैं. No, Ramdas है. Ramdas, I don't know if he's attending from start or he must have observed my videos carefully. Shivani, Sunaina, excellent. Okay, you all are right. So see students, again as I have told you, so what is CSR scorecard में कहा है? Basically, these company are the top spenders when it comes to CSR. Okay, and ये students basically this is a certain report that okay. Now tell me students, first of all ये textbook में लिखा है. What exactly is BCG? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. बेसिकली नाउ इफ यू आस्क कि मैम ये ग्रुप का काम क्या होता है, बेसिकली इफ आई विल टेल यू, सी कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कंसल्टिंग से मुझे याद आ गया है, मैं आप लोगों को टुडे आई एम गिविंग यू अ न्यू टाइप ऑफ एग्जांपल बिकॉज आई हैव नेवर टोल्ड यू दिस बिफोर. एवरीवन इन द क्लास नोज हु सलमान खान इज. I don't remember if I told you this first, but तुम लोग तो शायद वो टाइम बॉर्न भी नहीं हुए थे. इनफैक्ट इवन आई वॉज हार्डली नॉट बॉर्न और मस्ट बी वेरी यंग. ही वॉज इन्वॉल्व इन मेनी केसेस लाइक फॉर एग्जाम्पल वो डियर कोई था, दैट एनिमल ही हैड शॉट. अदर देन दैट इफ आई विल टेल यू, he was involved in some sort of drink and drive case also. if you अगर if you at least know about it, news पढ़ते हो तो पता होगा क्यों. there is a certain reason why I am telling you this. uh, students, I mean इतना किसी के against कुछ हुआ इतना, I mean he was in a bad name, almost a very bad name. there is someone known as PR, public relation officers, PROs. Yes or no? His PRO basically, there was some lady known as Reshma something. I think Reshma Shetty, something like that. What she told Salman Khan, tell me students, have you heard of Being Human? आपने Being Human का नाम सुना है? सुना है तो can you tell me what exactly it is? What exactly is Being Human? What is their role basically? क्या करते हैं? Good Shamal, it is basically a foundation run by Salman Khan. Basically अगर आप देखते हो उसके जो भी clothes, whatever other things you have, basically what they normally do it is
उसमें से whatever profits they get, they give it to a charity, something like that. तो his Salman Khan's PR suggested him कि आप ही ऐसा क्यों नहीं करो. Now if you see students normally in the news, what Salman Khan is famous for, हम सुनते हैं ना कि भाई का दिल बहुत बड़ा है. He helps the society a lot. तो सेम वे स्टूडेंट्स, कई बार अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, CSR एक्टिविटीज sometimes they are done also in order to gain public trust. Okay, that is what is told here basically. Now if I will tell you, see, textbook के points बोल रही हूँ. Companies जो होती है, see students, now I am giving you an example. Like you tell me very frankly, for example, if in one class, चलो तुम second में हो, if you have scored, let's assume 75%, okay, just an example again. Now you tell me, um, in your third grade, what will your parents expect from you? How much you will score? Can you tell me any rough figure? कोई रफ फिगर बता सकते हो? माई क्वेश्चन टू इज, अगर फॉर एग्जाम्पल इन द सेकेंड क्लास अगर आपको 75% आए, तो व्हाट विल योर पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि थर्ड स्टैंडर्ड में आपको कितने मार्क्स आने चाहिए? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स? I mean anything. It could be anything. Good, Shamal. She is basically telling more than 75. Absolutely. हाँ, मतलब above 80. मतलब मैं आपको क्या, no one will say ना कि तुम्हें ये साल for example 75 आए तो नेक्स्ट ईयर 60 आना चाहिए. एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं. येस और नो? ओके, दैट इज व्हाट आई मीन योर स्टूडेंट्स. तो सेम में फॉर एग्जांपल कंपनी ने अगर ये साल 200 करोड़ डोनेट किए, ओके, फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट ईयर एवरीवन वुड एक्सपेक्ट कि वो ज्यादा ही करे. राइट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. ये सब जो टर्म्स है, इट कम्स इन CSR स्कोर कार्ड्स. Okay, see, normally, again, if you will ask me ki ma'am, why are these terms and all basically introduced? Basically, students, इसमें in a way it's good. I remember, मैं आपको एक example दे रही हूँ. When I was young, okay, हम लोग same thing we used to do for an NGO. हमारे स्कूल वाले what they used to do us is, वो लोग हमें टारगेट देते थे. यू रिमेम्बर, आई आप लोगों ने भी किया होगा. आई यूज टू गो इन ईच एंड एवरी होम कि प्लीज डोनेट, प्लीज डोनेट. फिर हम वो डोनेट करते थे. वी यूज टू टेक अ साइन एंड ऑल. ओके, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स, उसमें भी कंपटीशन लगता था. आई रिमेम्बर कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू कलेक्ट ओवर 500 रुपीज तो आप लोगों को पेन मिलेगी. इफ आप 500 के ऊपर गए, दे विल गिव यू एन अम्ब्रेला, something like that. So see students, I mean, after all, many times what even children are motivated in this. See, children anyway, they are very, I would say, हम बोलते हैं ना भोले होते हैं. They will be like, कि हाँ मुझे गिफ्ट चाहिए. But ultimately, see, this is a good cause. पैसा अगर इकट्ठा हो भी रहा है तो किसी के, it is being used for a constructive purpose. Yes or no? That is what is basically told over here is, right? तो उसमें वही कहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एवरी ईयर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, ओके, आई विल सी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ अब. ओके, व्हाट्स रिटन इन योर टेक्स्ट बुक. Many a times, students, I will tell कि companies do not need to carry forward any, सी textbook का बोल रही हूँ, any shortfall in CSR expenditure to the next financial year. मतलब many a times we say ना students कि if we are this year is not good for a business, तो I mean, वो shortfall है वो next year carry forward करेंगे. I mean, see students, what is basically told here is normally CSR and all. See students, normally compulsion नहीं होता है. What companies do is out of their will, yes or no? But normally if you take, मैंने आप लोगों को जो companies का example दिया, Godrej है, Reliance है, all of these normally, why I am telling you this is ये at least 2% का जो है, that is made compulsory. Now you will ask me, now why ma'am? सी स्टूडेंट्स, यू टेल मी, अगर हम 2% दे रहे हैं
Ideally it is very huge. अब देखो कंपनी के people, if you see their total profits are in crores of rupees. I mean, you tell me, अगर compulsory नहीं होता ये 2%, do you think owners would have really contributed to the society? What do you feel? Would owners have contributed अगर ये compulsion नहीं होता तो? See, that is why students, they are keeping it compulsory basically, at least ये 2%. राइट, नो वन वुड हैव डन। स्टूडेंट्स ही कई बार हम बोलते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग खुद देखो, अगर व्हेन वी टॉक अबाउट टैक्स फाइलिंग, अभी ऑल ऑफ दैट इज गोइंग ऑन। सो नाउ यू टेल मी, नाउ फॉर एग्जांपल इफ tax filing is not made compulsory by the income tax authority, would anyone pay the tax on time? चलो टाइम तो भूल जाओ, फुल टैक्स भी कोई पे नहीं करता। yes or no, that is what is told over here is right. So I mean, always it is aimed students कि आप CSR का जो आपका contribution है वो बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए। okay, see, now what I will tell you your students is, key conclusions। आपकी टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट लिखा है कि नॉर्मली कंपनीज एक्ट ने जो प्रोविजंस रखे थे उसमें मेनी कंपनीज मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है स्पेंडिंग के लिए वो नहीं कर पाए थे। ओके, नाउ सी, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स, कंपनीज हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉन्ग CSR पे वो फोकस करते हैं। सी स्टूडेंट्स, रिमेंबर CSR करना ऑल्सो, अगर आप देखते हो, first you have to select a good field where you need to contribute, yes or no, a good cause I mean। so for example, अगर आपको पैसे education sector में you want to put, और healthcare sector, right, or Infosys जैसा, for example, promoting employment opportunities by educating people, right। तो I mean, first of all companies identify that कि which is a good cause। इसमें again I have told you, cause identify करना and all। for example, इसमें ये जो top management होता है, okay, unka thinking vision plays a very important role। other than that, if you see, if you look, have a look at this PPT, even all of these things matter a lot students। see, isme there are 3 P's of CSR। see, this question is so important, it is repeated in all the slides। company को खुद profit होना चाहिए, people I mean stakeholders also, obviously shareholders है अगर, we need to ask them, they are also the owners of the company, yes or no। इसमें if you remember students, especially when it comes to CSR, shareholders might not be the ones who are happy with the concept। I hope आप लोगों को याद है, because it is their hard earned money। कंपनी के प्रॉफिट्स में से पैसा जो है, it should ideally shareholders are the ones who deserve it, but social activities में जा रहा है, right, and planet। I have told you many companies care for the planet, right? By CSR करके planting trees and all, SBI and all ये सब companies है। Okay, so that is what is told here basically। now see, if I will tell you, textbook में लिखा है education tops the priority list for initiatives। I have told you, right, आप हर एक कंपनी का ले लो education, because see students, हम बोलते हैं ना, India has a maximum youth population। okay, so education is something that is very important। other than that, the other sectors, as I told, health मतलब medical sector, environment मैंने आप लोगों को कहा, sanitation and drinking water। this also students, if you remember when I had shown you the video of Havels, yes or no, Havels का वीडियो दिखाया था, this was always the top priority, इंडिया में, especially if you see after that movie Toilet, yes or no, how much it has become compulsory to maintain good hygiene and all, right? Other than that, if you see drinking water, this is again very important students, agricultural support to farmers। what does this mean students? हमारे country के जो farmers है, normally there are so many protests and all that keep on going, yes or no, what is basically told over here is कि farmers के लिए, for example, providing them tractors, या तो good quality seeds, fertilizers, pesticides दो, some projects like that। okay, तो उसमें वही कहा है students। see, main reason is, I will tell you students,
companies like Tata and all, if you see, they run their own foundation rather than just donating. I will tell you the reason why this is important, students. See, many a times, I've heard a lot about this in India. What normally happens is, for example, if I will tell you, especially in India, the biggest concern that everyone has, क्या होता है कि if we are ready to donate, everyone is ready to donate, but what the major problem happens is, क्या हमारा पैसा अच्छी जगह पे यूज हो रहा है कि नहीं, everyone has that doubt. तो उसमें नहीं लिखा है कि स्टूडेंट्स की, अगर लोग विश्वास करके बेसिकली, if they are giving you money कि तुम कुछ अच्छा काम करो, तो I mean definitely we all should, as a company like Tata, students normally have given you many examples. What is basically, they themselves are interested in CSR. ऐसा नहीं है कि पैसा सिर्फ डोनेट कर दिया है, कर दो. राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ. ओके. हाँ. तो ठीक है, दिस बेसिकली उसमें वही कहा था. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टेल यू, हैवेल्स करके कंपनी है, नॉर्मली इफ यू सॉ, वो राजस्थान बेस्ड था. तो आई मीन ऑब्वियसली जो कंपनीज होती है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, आई मीन दे विल, रिलायंस है, इफ यू नो स्टूडेंट्स, रिलायंस अगेन दे आर बेसिकली गुजरातीज. तो आप लोगों ने, इफ यू रिमेंबर, आई हैड शोन यू, दे हैड built up many hospitals in Gujarat and all. तो दैट थिंग इज वेरी ऑब्वियस स्टूडेंट्स, राइट, बिकॉज हम जो, मे बी फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो गांव होता है, विलेज होता है, इट्स वेरी ऑब्वियस, वी हैव सेंटिमेंटल फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट एरिया. यस और नो, राइट. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है. फाइन. या. So, if you have understood this, I will move to the next answer, students. Future of CSR in India. This is again a very important answer. And students, in the meanwhile, in the break, you can also check. What I have done basically is, आपके जो assignment. See, today I am reminding once again because there are many people who hear my recorded videos also. Today is officially my last lecture for you all. Okay, I mean पूरा MCOM का हो ही रहा है. What I basically mean to tell you over here, students, is, कि वॉच माई ऑल माई प्रीवियस वीडियोस. एंड अभी भी ऐसा कोई है जिसने अगर असाइनमेंट नहीं सबमिट किया है, make sure you submit it by tomorrow, otherwise you will be failing in internals. See, I know there are many people who have taken late admission and all. वो लोग की भी कुछ गलती नहीं है, right, but do the things on time. Okay, because I know many people have already submitted, अभी भी कर रहे हो, good to see that. Okay, so I will see, मैंने आपके साथ जो शेयर किया है स्टूडेंट्स, बेसिकली इट इज फ्रॉम डे वन टिल टुडे पीपीटी. ओके, आप लोग एक काम करना, बीच में अभी 6:45 को जब ब्रेक आएगा, जस्ट हैव अ लुक एट इट वन, 6:40, आई मीन, या 6:40 को. ओके, सो लेट मी डू वन थिंग स्टूडेंट्स. सी, इसमें बेसिकली क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ग्रोथ एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव. इफ यू सी, मतलब व्हाट हैपन स्टूडेंट्स इज, मेनी कंपनीज फॉर एग्जांपल्स, इवन दे गेट अ लॉट टू लर्न. तुम्हें क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, व्हेन वी basically have a word with someone, CSR में, if you remember, I had told Sudha Murthy's dialogue, KBC में she had told this, if we want to do CSR activity, always remember, it's not like that कि हम एकदम हाई फाई कपड़े में पर्स लेके जाएंगे जीन्स में. they will not even look at you अगर हम उनके जैसे बन रहे हैं. yes or no, like for example, going in simple clothes, इंग्लिश में उनसे बात नहीं करनी है. what we normally do is speak with them in what language, maybe their local language. Okay, तो तभी it will make a difference. mission and मतलब वो mission, vision, statement, values. what does this basically mean students, mission, vision and all? What the top management feels, हम बोलते हैं ना वो देने के लिए भी, you should have that feeling from inside. that is what is basically told over here, students. Okay, I hope you are understanding. See, for those of you who don't know, starting May, I had taught all of you the concept of CSR. So, those who want, they can watch my previous slides. Okay? Yeah.
Now I will share the next PPT with you. Just give me a minute, students. Let's take this one, students. Videos अभी time कम है, so next lecture I will show you. Okay. Future of CSR in India. Now see students, what does this basically mean? Future of CSR मतलब इंडिया में what exactly, how CSR activity is going? Do companies donate or are they not donating? Whatever it is उसकी बात हो रही है, ठीक है? So for example, see, there is a clear need for मतलब see पहले I think I will take up your textbook points, okay? उसके बाद I will explain because यहाँ पे जो है this is just a general conclusion, okay? Yeah. अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स इन जनरल द कंसेप्ट ऑफ सीएसआर इज रिलेटिवली न्यू इन इंडिया. अगर आप देखते हो ये जो था बेसिकली सीएसआर लॉ, इट केम इन इंडिया इन द ईयर 2014. मतलब हाल ही की बात है. ओके आप देखते हो आई हैव टोल्ड यू ये सब जो कंसेप्ट है अगेन इंडिया यू सी स्टूडेंट्स नॉर्मली वी फॉलो कंसेप्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज वहां से जो नए आते हैं स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एचआर और अदर एक्टिविटीज राइट. तो उसके बाद अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स देयर हैव बीन ट्रेमेंडस चेंजेस इन सीएसआर. कंपनीज नाउअडेज दे आर कमिंग फॉरवर्ड. आप देखो स्टूडेंट्स रिसेंटली आई रिमेम्बर नरेंद्र मोदी जी का वो कोरोना वायरस का चल रहा था. सो मेनी कंपनीज हैड कम फॉरवर्ड एंड डोनेटेड टू द हॉस्पिटल्स. यस और नो? ओके. इसके अलावा इफ यू सी स्टूडेंट्स व्हाट इज टोल्ड हियर बेसिकली इज कई बार इफ आई विल टेल यू नॉन कंप्लायंस मतलब अगर कंपनीज बोलती है ना कि फॉर एग्जांपल दिस ईयर वी डिडंट अर्न इनफ प्रॉफिट, तो हम ये जो 2% में आ रहा है वी वोंट पे दैट. See students, it is clearly written basically companies if they are non compliance matlab if they are not following the rules they also have to give a strict reason. लाइक अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये ईयर में सीएसआर में नहीं डोनेट करूंगा बट कमिंग ईयर में दोनों साल का दे दूंगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नॉट अलाउड स्टूडेंट्स. दिस इज नॉट व्हाट वी कॉल प्रोफेशनलिज्म, right? Because see for example need of the hour, yes or no? For example if I will tell you students, you tell me is it fine if I am telling that for example today I won't eat food but tomorrow I will eat आज का खाना एंड कल का खाना. या तो कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं पूरे महीने का खाना एक ही दिन में खा जाऊंगी. इट्स नॉट लाइक दैट स्टूडेंट्स. यस और नो? जब भी रिक्वायरमेंट्स होती है तब भी हम ऐसा नहीं बोल सकते. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन से एवरीथिंग हम बोलते हैं ना वन थिंग एट अ टाइम. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. ओके. सो सी नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया इफ आई विल टेल यू. ओके. ये जो 2% का रूल था दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके. some companies who genuinely are doing for the society. For example if I will tell you Tata's obviously ये नाम तो है ही. इसके अलावा for example if I will tell you Birla Group students, this is again I would say a really very engaged active company when it comes to CSR. Birla family also just like Sudha Murthy, I have heard उनकी जो wife है basically she is a very simple lady. उनके घर पे there are many chefs and all. Okay, but still when someone comes to her home वो अपने हाथों से खाना बनाती है. That is how down to earth she is basically. ओके. तो उसमें वही दीज टू कंपनीज. इसके अलावा सी स्टूडेंट्स नॉर्मली उसमें वही कहा है कि रादर देन कंपनीज जस्ट गिविंग अ चेक. सी दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स. चेक अगर मैं फाड़ के दे रही हूँ सीएसआर में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एक्टिव एंगेजमेंट इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स. यस और नो? दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर. ओके. नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू बेसिकली ओके सी मैं आपको अभी इन जनरल टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो बता रही हूँ कि इंडिया में टू बी वेरी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट CSR activities are not very successful. Okay, if I will tell I mean there is
too much, I mean scope for improvement. बेसिकली उसकी बात हो रही है, राइट? बिकॉज यू नो नॉर्मली व्हेन इट हम कुछ अगर लीगल कर देते हैं देन पीपल फॉलो, अदरवाइज नो वन फॉलोज. दैट इज व्हाट इज टोल्ड. Okay, so see, now let's have a look at these PPT points. See, if we are not able to finish, we can do it in the next lecture. Okay, transition from the present compliance centric approach to new paradigm. See, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, हम बोलते हैं ना, मेनी स्टूडेंट्स आई रिमेम्बर दे यूज टू डू दिस, कि अगर पेरेंट्स आते थे तो यू नो उनके डर से पढ़ाई करते हैं. बट ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स. या तो सम पीपल दे फर्स्ट सी चोरी करते पहले बिफोर स्टीलिंग, इज समवन वॉचिंग मी और नॉट. It never works like that, students. You yourself should have that feeling कि stealing is a bad thing. Okay, that is what is basically told over here is, yeah. Next, if I will basically tell you what is written here is creation of enabling environment and an array of support measures. जैसे कि मैंने आपको टाटास का कहा स्टूडेंट्स, इन्फोसिस, they have their own team for CSR. Like if you remember India में many a times floods आ जाते हैं, earthquakes आते हैं. Okay, India is a huge country basically. So if you see तो उनकी एक relief team, they are already ready. ओके, ऐसा नहीं है कि हम बाद में टीम बनाएंगे, बाद में देखेंगे. दे हैव अ प्रोएक्टिव अप्रोच. प्रोएक्टिव मीन्स व्हाट? बेसिकली पहले से दे नो व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट. ओके, या. Business schools teaching CSR to facilitate this process, very important. See students, business schools means basically colleges for MBS. Normally what happens is students, if you even know about it, there is one course or one degree. It is known as Masters in Labor Studies. अगर आप लोगों को पता है तो Masters in Labor Studies, MSW करके भी है, Masters in Social Work. So normally those students who enroll themselves for such program, they are committed towards such social activities. Like कई बार किसी को अगर help करने जाना है, कुछ अच्छा करना है, that is what is told here basically. Okay, so I mean business school. See now, normally those who do MBA, we all know they have a very matured, काफी they are above their 20. तो अगर हम ऐसे लोगों को we encourage them, so even after they start earning, they can contribute in a very positive way for the society. Okay, that is what is told over here, students. Next, if I will tell you basically industry associations to share experiences and reward best practice. Students, I'll tell you what exactly industry association is. ये point जो है आपको next lecture में भी it will be useful to you. Why? Basically because next lecture you will study about NGOs. So I will tell you, मैंने आप लोगों को ये शायद बताया था, there is a certain NGO known as NASEO. Okay, मैंने आपको, I am sure I must have told you, National Society for Equal Opportunities for the Handicapped India. I have been associated with this NGO since school days. Okay, मैं आप लोगों को क्यों ये बता रही हूँ, इवन गोदरेज व्हेन आई वाज वर्किंग, ओके, दे हैड बेसिकली अ टाई अप विद दिस एनजीओ. क्या होता था बेसिकली, इफ आई विल टेल यू नो, वन डे इन अ ईयर एटलीस्ट व्हाट यूज्ड टू हैपन, ऑल द एम्प्लॉयज दे यूज्ड टू टेल देम कि यू डोंट हैव टू कम टू वर्क, बट कंपल्सरीली आप लोगों को ये एनजीओ में जाना है. स्टूडेंट्स, व्हेन वी वेंट देयर, हम रियली व्हेन वी सी अदर पीपल वी फील दैट वी आर वेरी लकी. अदरवाइज हमारा नॉर्मली व्हाट इज आवर एटीट्यूड, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट. So that is what students की industry companies they should themselves encourage employees कि आप जाओ वहाँ पे participate in some good activities, give back to the society, right? That is what is required. Reward best practice. If someone is doing good, why not reward them? See, I teach management and all to other students. Rewards are not always monetary, students. Remove that thing from your mind. Even a good word of appraisal, appreciation, वो भी reward में आ जाता है. Fine students, so 2 points are left basically. I will do it in the next lecture. I will also show you some videos in the next lecture. Okay, so let me do one thing. Let me stop.